Good afternoon, class. So this is your new foundation comprising of 80 marks. So your first question of section A. Read the following passage and make notes and write a summary with suitable title. As you can see, the question is of 10 marks. The passage reads as vitamin D increases the efficiency of the intestine to absorb calcium and phosphorus from food in order to mineralize the bones in the body. It also increases the activity of bone cells that make and lay. If the body has adequate amount of calcium and phosphorus, they are incorporated into the bone matrix and the result is a strong healthy skeleton. Our skin can make vitamin D which is exposed to sunlight. However, most people living in North America do not have enough sunlight in the winters to make adequate amount of the vitamin D. Young children who do not get enough calcium and vitamin D are unable to properly mineralize the bone matrix. Now, I have read first 5 lines. In response to that, look how the answer is to be written. First of all, giving a suitable title to the passage. This is importance of vitamin D. As the whole passage, I have read the first 5 lines. The whole passage talks about the importance of vitamin D. तो उसी को हमने टाइटल बना के लिखना है and make sure that you are underlining the title as well. Fine. टाइटल को अंडरलाइन करने के बाद the next step is to write the notes. तो हमने नोट्स को यहाँ पे मेंशन भी करना है, जैसे लिखा हुआ है नोट्स. ठीक है. नोट्स के बाद the main points. Look, I have marked the main points here. The first is benefits of vitamin D, second deficiency of the vitamin, and the third is source. In the first part, benefits of vitamin D, as you can see, all the 4 points are written in accordance to the main. It means that कोई भी point जो है वो irrelevant नहीं है. जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन वो सब पॉइंट्स मैच होंगे मेन पॉइंट से, आप चेक कीजिएगा. तो बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी: increases efficiency of calcium and potassium, activity of bone cells, forms healthy skeleton, strong and healthy bones. So all the 4 points are absolutely written in accordance to the main. Deficiency of vitamin D: risk of bone fracture, absorbs 15% of calcium from the bones. It means that the bones might get weaker. Disturbance in the functioning of bones and increasing risk of heart attack. And you can check the symbol of increase being used here by the student, and it is also mentioned later in the abbreviation of the passage. The third main point is source of vitamin D, and all the 4 points are written accordingly. Okay. Next important step is to check whether you have marked the main points and sub points as per the format or not. 1, 2 and 3. Look, I have encircled all the 3. Now this A, B and C, these are the main points, and these are shown with the capital letters, and their subparts are written in small alphabets like this. Fine. You can also write the main points as 1, 2 and 3, and the sub points as Roman numbers like 1, 2, 3. और या आप क्या कर सकते हैं, you can write it like 1, 1.1, 1.2, 1.3. So all the 3 ways are correct. आप किसी भी तरह से इन्हें लिख सकते हैं जो मैंने आपके सामने बताया. Now coming to the abbreviations, now you can see how beautifully the abbreviations are kept in the box by the student, and every short form being mentioned in the answer, those are written here. Increase का symbol बताया हुआ है, calcium, potassium, vitamin D, function, ultraviolet rays.
So in a small box these abbreviations are kept. और इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, you will not be writing those abbreviations in your summary. पैसेज में नोट्स में आप लिखेंगे, लेकिन समरी में आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते, एब्रीविएशंस यूज़ नहीं कर सकते. सो दिस इज़ योर समरी, बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी. फाइन. अब समरी देखिए आप, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसी एक समरी होनी चाहिए, विद फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज, विदाउट लीविंग एनीथिंग विच इज़ इंफॉर्मेटिव, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. हर एक चीज़ प्रॉपर मेंशन करके, कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है, या कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रिड्यूस करके जो है लीव कर दी गई. यानी कि इट इज़ नॉट जस्ट द रिडक्शन ऑफ योर पैसेज, इट इज़ रादर द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द सेम, हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन इनसाइड. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, short answer type. This is the passage about Miss Miriam, and this is an unseen passage, and the question follows as such. Miss Miriam was a cashier at Hinkles. आपने रीड करने के बाद जो है इसका आंसर Hinkles आता है. Miss Miriam was easy going and lovely lady. She was a person who gives financial support. Fourth one is banker, who is what is a Cupid's art, and who was Macramsay. He was a banker. तो Cupid art का नहीं लिखा हुआ है, तो ऊपर है a person, a banker, a person who gives financial support to others. And the last one is policeman, who bought MC Ramsay to Hinkles, Macramsay to Hinkles. एक policeman लेकर आया था. So this is your second passage. Now come to the next question, question number 3. As you can see, the question is about a classified advertisement to be written, to be given in the newspaper for the post of a sales manager for Srinagar district. And you are an entrepreneur and you own a factory for making apple juice. आप एप्पल जूसेस की फैक्ट्री ऑन करते हैं, एंड यू रिक्वायर अ सेल्स मैनेजर फॉर द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट. फॉर दैट यू हैव टू राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़ पेपर. इन दैट रेस्पॉन्स दिस इज द आंसर, सिचुएशन वैकेंट. आफ्टर दैट wanted a sales manager for the newly opened factory making apple juice. This is the basic qualification required. As you can see, post matric or graduate, post-graduate, as per the post you can mention here the required qualification. As you are looking for a sales manager, so this qualification suits it, that the person needs to be a post-matric. Fine, this is the basic qualification required against the post. Now age, accordingly, if you're asking for some principal, vice principal, तो फिर देखिएगा the age counts the experience as well. Fine, so it needs to be added. वो फिर 45 50 से ऊपर ही होगा. Gender, as per the requirement, as per the post you have written, mentioned here as both male and female. So anyone who meets the above quoted requirements can apply for the said post, and the salary is negotiable for the deserving candidate. या आप mention भी कर सकते हैं salary, not an issue. ठीक है. And after that you need to give in the contact details. Contact details कैसे देनी है आप जानते हैं. फ़ोन नंबर पूरा नहीं देना है, आधा लिख के, ठीक है, क्रॉस करके आगे, and the name of person writing the giving the advertisement or his designation as being mentioned in the costume. So this is your third answer to the third question. Coming to the next now, the fourth one. Write a letter to the chief librarian of a reputed university and seek her help for making a virtual library in your school, for that students can access all books easily.
And in response to this question now, you can check the first thing written mentioned in the answer is sender's address, and it's written here as Kachi Chawni Jammu. It's better to write examination hall if it is not mentioned in the question. If your address isn't there in the question, okay, if you aren't being given any identity and any specific location from where you belong, or you're writing the letter, sad letter, so rather than writing or giving any personal information or writing an address which doesn't match the question, it is important, it is far better to use examination hall here. After leaving a line, look how the date has been mentioned. This is the format of the date, 3 Jan. अगर आप लिखते हो, अगर आप January करते हो पूरा, then there is no need to use any punctuation mark. 2024. If you are writing the short form as JAN, then mark it with a full stop dot. ठीक है, 2024. The chief librarian, Andheri University, Jammu. This is now receiver's address. Fine, receiver's address. One who is receiving your letter. So the chief librarian, Andheri University, Jammu. Let's have a look if it is mentioned in the question or not. No, not at all. It is not mentioned in the question, so it's now your choice. As you are writing the receiver's address, you can write the chief librarian, Jammu University, Kashmir University, Delhi University, Andheri University, जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. But make sure कि आप फर्स्ट लेटर ईच वर्ड का जो है वो कैपिटल लिखेंगे. And after leaving the appropriate space, उसके बाद सब्जेक्ट बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, पूरा एक सेंटेंस नहीं होता. सो दिस इज़ द करेक्ट वे टू राइट अ सब्जेक्ट. रिक्वेस्टिंग हिम इन मेकिंग अ वर्चुअल लाइब्रेरी, या रिक्वेस्टिंग टू मेक अ virtual library. Look, the mistakes have already been encircled. Sir, I am Rashi, a member of NGO in Jammu. So we have initiated a program. Rather than writing Rashi here, और ये जो वाइटनर यूज़ किया है इसका भी ख्याल रखिएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे अगर ऐसा आपने फाइनल एग्ज़ाम में किया, ठीक है, आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो सकता है. ये मैं पहले ही आपको मेंशन कर दूं यहाँ पे. whosoever is using this whitener here, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली मना है. आपकी जहाँ इंस्ट्रक्शंस आपके रोल नंबर स्लिप पे दी हुई हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. सो रिफ्रेन फ्रॉम दिस इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना किया गया है और इस चीज़ से बचें आप. सो आई एम राशि अगर आप लिखते हैं, रादर देन मैंशनिंग द नेम हियर, इट इज़ बेटर टू यूज़ डेजिग्नेशन. अगर क्वेश्चन के अंदर नाम मेंशन नहीं है, डेजिग्नेशन यूज़ करो आप. इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ एनजीओ, राइट द सेक्रेटरी ऑफ एनजीओ. So we have initiated a program to make a virtual library in our school in order to make betterment in student education. Rest is okay. बाकी सब ठीक है. मैंने जहाँ पे बता दिया आपको जो दो बिग मिस्टेक्स थे, एरर्स थे, ठीक है. If your name is not mentioned in the question, it is good to mention designation rather than name. So your answer ends here. Next one. Coming to the fifth question now. The sixth one rather. This is a speech, and the topic for speech is importance of common brotherhood and kindness that is fast declining in our society. You have to write a speech for the morning assembly on this topic, and again in the speech your identity has been concealed again. ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, nothing. So respected principals, sir, teachers and my dear fellows, a very good morning to all of you. उससे पहले आप देख सकते हैं कि टाइटल भी है, ठीक है. सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट अर्ली.
इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड काइंडनेस दैट इज़ फास्ट डिक्लाइनिंग इन आवर सोसाइटी। देखो टाइटल जो है ना यूजुअली ये शॉर्ट होता है, फाइन, बट आपको स्पीच के अंदर एक चीज़ ख्याल करना है कि स्पीच का टाइटल चेंज नहीं होता है, जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है सेम वही आपने लिखना है। ओके, अंडरलाइन करिए इसे प्रॉपर तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ, और पोजीशन कहाँ किया हुआ है, बिल्कुल सेंटर में। So the first part comes, the first part is to wish everyone present in the assembly, like principals, principal teachers, and dear fellows, you're wishing them a very pleasant morning, जैसे भी आप लिखते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। एंड टुडे आई के बाद आपने नाम मेंशन किया हुआ है, want to give a speech about the importance of common brotherhood. Again, you have mentioned the topic on which you are going to throw light upon. So in the second paragraph comes exposition of the topic, that is you have to expand it now depending upon how much data you have of the particular topic, kitna knowledge hai aapke paas, you will throw light upon the same. So nowadays we have seen a loss of moral values and ethical values with development in the technology. So अब जो है इस पैराग्राफ में, in the next two paragraphs there is exposition of the topic. Okay, अब जितना आपने पढ़ा हुआ है, जितना नॉलेज है, वो आप सब पुट इन करेंगे। And this is the last one, the concluding one. At last, this one. Today there are so many problems faced by the individuals. Okay, depression, anxiety, suicide, and these have become common. So in order to eradicate all these problems from the society, in order to eradicate all these bad things from the society, we need to put hands together for a common cause, that is brotherhood. ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वी कैन हेल्प ईच अदर, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर, वी कैन ब्रिंग ऑल द पीपल लिविंग इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड अंडर अ सिंगल कैनपी। ठीक है, हम सबको एक साथ ला सकते हैं सो दैट वी कैन रन टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। एंड लास्ट पे ये नहीं, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, आप अपना नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, you have to write the name of the person who is delivering the message that is given in the question, या आप इसको XYZ पे एंड कर सकते हैं। Look, I have added some more questions, those the questions which are not attempted by the student, like और के जो आपके आंसर्स क्वेश्चन, ठीक है, और पार्ट जो है वो भी कुछ ऐड किए हुए हैं। लुक, क्वेश्चन नंबर 6, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर शेफ। हाउस नंबर 180 कच्ची छावनी जम्मू। ठीक है, इफ़ इट इज़ मैंशन राइट द सेम, इफ़ नॉट राइट एग्जामिनेशन हॉल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। देन आफ्टर डेट प्रॉपर लिखी हुई है, आफ्टर लीविंग द लाइन रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर शेफ। ये एप्लीकेशन विद रेज्यूमे है, देख लीजिए। This question, this is actually answer number 5, this is not the 6th one. तो मार्क भी सही कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में जब आंसर अटेम्प्ट करते हो ना तो क्वेश्चन नंबर चेक करके। थ्रू द कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू आई गॉट टू नो अबाउट द वेकेंट पोस्ट ऑफ सीनियर शेफ
in your hotel and I wanted to apply for the SAT post. Yeah, I am applying for the SAT. So the first thing to mention here is by the means or the source through which you came to know about this post, how you came across दिस पोस्ट, कैसे आप इस तक पहुँचे, ठीक है, आपको वो सोर्स बताना पड़ता है. इफ़ यू मेंशन द डेट ऑल्सो, ये बहुत अच्छा है कि अगर वो डेट भी आप मेंशन करें. सपोज़ एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, एक स्कूल है, they might have given advertisements for different posts at different intervals of time and on different dates. ठीक है, मान लो आज दे दी टीचर की, कल असिस्टेंट की दे दी, परसों और किसी की दे दी, ठीक है. सो दे वांट कम टू नो कि किस पर्टिकुलर डेट को उन्होंने एडवर्टीजमेंट किस पोस्ट के लिए निकाली थी. इफ़ यू गिव द रेफरेंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑल्सो तो बेटर रहेगा, एक अच्छा आंसर बनता है आपका. एंड आई वॉन्टेड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट. सो here you are mentioning the highest qualification as being taught to you earlier. The highest qualification against the post, वही आप पहले mention करते हैं. Highest qualification against the post. Suppose if you are applying for the maths teacher, तो जो आपके पास highest degree है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. यू नीड नॉट टू टॉक अबाउट योर बेसिक स्कूलिंग, बेसिक एजुकेशन, मैट्रिक, क्लास 12, ग्रेजुएशन, कुछ भी नहीं. आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री आपके पोस्ट के अगेंस्ट. जैसे कि स्टूडेंट ने लिखा हुआ है मास्टर डिप्लोमा इन मास्टर्स इन culinary arts in Delhi, from Delhi. Now coming to resume, आप देखिए नेम, फादर्स नेम, एज, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्लास, किसके थ्रू पास किया है, यानी कि मोड क्या था, CBSE, JK बोस, यूनिवर्सिटी, ठीक है. परसेंटेज एंड ईयर ऑफ पासिंग, जस्ट लाइक योर मार्क्स कार्ड, जो प्रॉपर एक आप मार्क्स कार्ड में जैसे होता है बिल्कुल वैसे. ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ठीक है, CBSE, JK बोस, क्लास 10, 12 और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसके थ्रू पास किया. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आप देखिए मास्टर्स लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन culinary आर्ट्स. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, पोस्ट के लिए जो आपकी पढ़ाई हुई होती है. स्ट्रेंथ्स मेंशन की हुई है, स्ट्रेंथ्स, गुड एट टेस्ट एंड स्मेलिंग, ठीक है, क्योंकि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, शेफ़ के लिए. टीचर के लिए होते तो और कुछ अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं, लाइक गुड होल्ड या डिसिप्लिन ओवर द इन द क्लास, ओवर द स्टूडेंट्स. तो जो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आप बताएंगे वहाँ पर. गुड इन हैंडलिंग द सिचुएशंस. सो लैंग्वेजेस में भी आप देखिए, लैंग्वेज को लेके इंग्लिश, कश्मीरी और हिंदी लिखा हुआ है. रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं. अब देखिए रेफरेंस जो है वो हमेशा पोस्ट के ही अकॉर्डिंग आता है. अगर अप्लाइंग फॉर द शेफ़ तो रेफरेंस प्रिंसिपल का नहीं दे सकते, ये याद रखिए, ठीक है. किसी एक रिनाउंड शेफ़ का ही देना पड़ेगा. यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, तो रेफरेंस किसी लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल का ही आएगा, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है मिस्टर राम प्रसाद, चीफ शेफ़ इन ताज होटल. अगर उसके अलावा फिर आप प्रिंसिपल वगैरह लिखते भी हैं कुछ तो दैट इज़ करेक्ट, लेकिन जो जिस पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एटलीस्ट मेंशन करना ज़रूरी है. और उसके बाद डिक्लेरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थीम ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट. So before you write this, before you approach this question, you must know what theme is. Theme की definition क्या है, theme किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. Theme is the central idea, or the main message, the focus, जिसके आसपास सारी स्टोरी होती है. That what the author wants to convey through a work of art. तो यहाँ पे फीलिंग्स ऑफ द पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये थीम जो है यहाँ पे स्ट्राइक होता है. एंड द 2 कैरेक्टर्स बीइंग पोर्ट्रेड हियर, उनके थ्रू इस थीम को बाद में जो है जस्टिफाई किया गया, मिस्टर लैम एंड मिस्टर डेरी.
बोथ आर फिजिकली चैलेंज, फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है, दोनों फिजिकली चैलेंज है. वन हैज़ अ बर्न फेस एंड अनदर इज हैविंग अ tin leg. ठीक है, his leg got cut in a bomb blast, and then after the reaction towards it, how they reacted, how they responded, and how differently they see the world. One is having a realistic approach towards the life, another is another has become an escapist because of the circumstances and conditions जो आपने पढ़ा हुआ है. छोटा भी है, he doesn't have that much of mental maturity to see the things as lamb sees. ठीक है, उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है. सो it made him an escapist. But after meeting with lamb, what happens? उसकी पूरी परसेप्शन लाइफ को लेके चेंज हो जाती है, एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इट चेंजेस द होल कोर्स ऑफ हिज लाइफ. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टेशन ऑल्सो, कि हाउ पीपल अडेप्ट दमसेल्व्स इन द डिफरेंट कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस. वो किस तरह से खुद को ढाल लेते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, एंड what are the things that make you aware of the sense of isolation and inferiority complex and how to overcome it. Okay? तो यही बताया हुआ. अब इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो देखिएगा. सेंस ऑफ आइसोलेशन होता है, सेंस ऑफ आइसोलेटेड नहीं होता है, गलत किया हुआ है. वी कैन सीन लिखा हुआ है, कैन इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सी. ठीक है, अ लिटिल चाइल्ड नहीं होता. अ लिटिल हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, तो चाइल्ड के साथ आपने इसको छोटा नहीं बनाया हुआ है, कम बनाया हुआ है. एक होता है लिटिल छोटा, एक होता है कम. लुक, एंटार्क्टिका. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस which at first was warm and had lots of diversity present in the past. The question is how Antarctica is a source to know about the world's present, past and future. Okay? So first talking about Antarctica, अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री says that, science says that it was once warm and it had a lot of diversity. और आज देखिए कि आज अंटार्कटिका कैसा है. सो दीज थिंग्स आर हार्ड टू बिलीव. ये चीज़ें इंसान के माइंड से बहुत बाहर चली जाती हैं, बट दीज आर द रियलिटीज़. फ्रॉम अंटार्कटिका हमें ये भी पता चलता है कि ये एक स्नो लैंड है, और जहाँ पे कार्बन फॉसिल्स जो हैं वो इसकी डेप्थ में मिलते हैं. सो जहाँ पे कार्बन फॉसिल्स मिलते हैं वहाँ पे हिस्ट्री मिल जाती है. सो इट टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस अर्थ. इट इवन टेल्स अस दैट हाउ वंस इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वाज अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका. किस तरह से अंटार्कटिका का हिस्सा था, ठीक है, कनेक्टेड था, एंड लेटर ऑन बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट आज देखें अंटार्कटिका कहाँ है और इंडिया कहाँ है. ठीक है, प्रेजेंट की बात करें तो हार्श एनवायरनमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स हार्श एनवायरनमेंट, यू नो, इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव देयर फॉर द ह्यूमन बींग्स. बट एट द सेम टाइम द effect of human processes has been seen there, like melting of icebergs, glaciers, reduction in the snowfalls. Okay? तो बहुत सारी चीज़ें देखी गई है. रिडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोप्लैंक्टॉन्स, जो वहाँ पे ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो वहाँ पे वेजिटेशन तो नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से वो चीज़ होती है, जो भी स्मॉल फोटोसिंथेसिस. So an interference with the environment, it finally leads to great
डिस्ट्रक्शन। तो फ्यूचर की बात करें तो मैंने आपको फोटोप्लैंक्टॉन्स का बता दिया पहले। फोटोप्लैंक्टॉन्स जो है वो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पे, लेकिन ओजोन डेप्लीशन की वजह से द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर पेनिट्रेटिंग अर्थ एंड द वाटर, द डिफरेंट आइसबर्ग्स, glaciers and the vegetation there, the activities there are disturbed, like photosynthesis हो रहा है फोटोप्लैंक्टॉन्स का, तो टोटल डिस्टर्बेंस है उसके इकोसिस्टम में, क्योंकि ये ओशन इकोसिस्टम है जिसे हम पढ़ रहे हैं, एंटार्क्टिका। तो यहाँ से हमें एक मैसेज भी मिलता है, इफ़ यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ अस। चाइल्ड लेबर पे एक स्मॉल ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप पूछा हुआ है, हाउ इट कैन बी एलिमिनेटेड, किस तरह से इसको एरेडिकेट किया जा सकता है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ मेंशन होती है ब्यूरोक्रेट्स, लैंडलॉर्ड्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप देखिए, नई कोई भी साइट खुलती है, नई कोई भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कोई भी जगह आप देख सकते हैं वहाँ पे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बैंगल मेकिंग फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री। उसके अलावा बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर जो है कॉमन है। इवन यू कैन विटनेस दिस अराउंड यू इन यूर सिटी। बहुत सारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, बेसिक राइट्स, एजुकेशन, ठीक है। सो bureaucrats, landlords, policemen, politicians all need to put efforts together, to join hands together so that इस पे रोक लग जाए। And it will be a kind of revolution, and it's a gradual process of course, but we need to take a step forward। अगर सारे एक साथ मिलके करें तो हो सकता है। So participation of public is very much important in this. Apart from what the government does and what are the laws being made and implemented by them, how strict government is upon the violators of the laws, उसके अलावा पब्लिक का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें। सो नेक्स्ट, ऑल वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इटसेल्फ। देखिए आंसर, often we are not able to experience many things due to our fears, so we must conquer it। शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट में ही लिखा हुआ दैट हम ब्लाइंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फियर। इफ़ वी हैव फियर, it means that we don't have the vision, we can't see the world properly. We miss the real chances to see world in a better way, in the best version। फियर है, पता ही नहीं है, मुझे पानी का फियर है, मैं अंदर जाऊंगा नहीं, बट आई डोंट नो हाउ ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट बी नोइंग हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज़ इनसाइड वाटर। मेरे को हाइट का फोबिया है, ठीक है, आई वॉन्ट बी क्लाइंबिंग द टॉल बिल्डिंग्स एंड वॉचिंग फ्रॉम देयर कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। सो इट क्रिएट्स अ फियर एंड इट्स एन इम्पेडिमेंट टू आवर विजन, ठीक है, हमारी विजन के ऊपर एक पर्दा है। सो वी मस्ट कन्क्योर इट एंड वी शुडंट let it spoil our life। Next short answer type, no, the paddler didn't expect the kind of hospitality that he received from the crofter। आप सब जानते हैं, wherever he went, he knocked the door and he was getting a very negative response from the people there। No one opened the door, no one welcomed him, कोई नहीं पूछता था, ठीक है। तो वो अपने वही रैट ट्रैप्स बेच के अपना गुजारा करता था। But then after when he knocked the door, when he met Crofter, he was given a very warm welcome there। So Crofter not only met him, but he showed a great hospitality towards the visitor, and it was totally unexpected। Okay? और इसके पीछे राज क्या था आप जानते हैं। He got it wrong that he might be one of my friend, a surgeon he met in the during war। Short answers,
देखो बिकॉज को कॉज मत लिखा करो, शॉर्ट कर दे तो दिस इज़ रॉन्ग। CAUSE लिखा हुआ है या COUSE, ठीक है, ये आप नोट्स नहीं बना रहे, यू आर राइटिंग द आंसर, तो ये गलत किया हुआ है। आई सेंस ऑफ सैड एंड रियलाइजेशन ऑल्सो हिम मी, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, इसकी कोई सेंस नहीं है। द क्वेश्चन इज अबाउट द फीलिंग्स, what feelings do you get after reading the lines from my mother at 66? It makes us emotional, it brings catharsis, purgation of emotions and thoughts, huh? Catharsis हो जाता है, we sometimes feel very much emotional and attached towards the author, कि वो कैसी फील कर रही होगी when she saw her mother, a doze open mouthed and ashen like that of a corpse when she was traveling to the airport, कैसा फील कर रही हो। अब पूछा ये है व्हाट फीलिंग डू यू गेट आफ्टर यू रीड दीज लाइन्स, सॉरी, तो क्या फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ इंटेंस इमोशन, ठीक है, बताइए। सो दैट्स वाई इट हैज़ बीन एनसर्कल्ड एंड क्रॉस्ड, क्योंकि आंसर ये करेक्ट नहीं है। नाउ फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एडिटिंग। तो आप देखिए एडिटिंग का ये पैसेज है आपके सामने, दिस इज़ द पैसेज, दिस एट फर्स्ट सीम्स अ ग्रेट मिसफॉर्चून, ठीक है, दिस एट फर्स्ट सीम नहीं होता है, सीम्स होता है, यू नो, एस और एस इज यूज्ड विद द वर्ब व्हाइल वी आर यूजिंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और हमने सिंगुलर कहाँ से पता चल रहा है, पीछे दिस यूज हुआ है, अगर दीज होता या दोज होता तो, ठीक है, एक से ज़्यादा होता। फॉर आई नो अ वन लेग्ड मैन, फॉर आई न्यू बिकॉज ही इज टेलिंग अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस, अ वन लेग्ड मैन कुड नॉट डू, और यहाँ से भी हमें पता चलता है कुड नॉट लिखा हुआ है तो पीछे न्यू ही आएगा, कुड नॉट के बाद डज लगा हुआ है, हाँ, पीछे वन लेग्ड मैन है एक, तो डज नहीं आ सकता, क्या आएगा, कुड नॉट डू वेरी वेल एज वुड कटर, वुड चॉपर, सो आई वेंट टू अ टिंसमिथ एंड हैज़ हिम मेक्स मी अ न्यू लेग, हैज़ नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट में है, तो हैड हिम मेड। अब देखिए अकॉर्डिंगली जो जो गलतियां हैं वो बच्चे ने नो लिखा हुआ था, न्यू नहीं किया था, क्रॉस किया हुआ है, 3 मिस्टेक्स आर हियर। न्यू लेग आउट ऑफ द टिन, माई बॉडी शाइन, शाइन नहीं आएगा, शॉन सो ब्राइटली, सो ब्राइट in the sun that I felt very proud of it, because he is referring to the time when all this happened, and it did not matter now, now लिखा हुआ है तो did not नहीं आ सकता, so it doesn't matter, ठीक है। अब देखिए शाइन को मैंने क्रॉस किया हुआ है क्योंकि शॉन था, फील को क्रॉस किया हुआ है, फेल्ट आएगा, एंड इट डिड नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि नाउ है आ गया, प्रेजेंट में आ गया, इफ माई एक्स स्लेप्स, फाइन। सो दिस इज द एंड ऑफ फुल फाउंडेशन। थैंक यू सो मच, प्रिपेयर करें अच्छे से, गॉड ब्लेस यू।